Assalamu alaikum. Welcome to Urdu Bitcoin live transmission. Again, this live transmission will be in English and Urdu, both languages. First in English, second in Urdu. We are going to look into some of our recently discovered AI coins, their price action. We'll do some technical analysis of their price action, where they can land up in quick succession, and also we are going to see some other artificial intelligence coins in the space and talk about them a little bit. So stay with us if you are interested in AI coins and in their space. उर्दू लिसनर्स हम पहले अपनी ट्रांसमिशन जो है वो इंग्लिश में कंप्लीट करेंगे. क्विक एक टेक्निकल एनालिसिस हैं कुछ रिसेंटली डिस्कवर्ड जो एआई कॉइन्स हैं उनके ऊपर कि उनके प्राइस सेक्शन कहाँ जा सकते हैं, और फिर हम ओवरऑल भी बात करेंगे कि डिफरेंट जो एआई के कॉइन्स हैं जो इस स्पेस में वो उनके बारे में बात करेंगे. इसमें इंजेक्टिव कॉइन काफ़ी ब्लो अप कर रहा है, और इसके अलावा वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम उर्दू में. और इसके अलावा जो चेन जीपीटी और ऑल इन के बारे में हमने रिसेंटली बात की है, एलेक्स के बारे में बात की है, उनको हम थोड़ा सा आखिर में एक्सप्लोर करेंगे. तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी इसमें स्ट्रीम में. ट्राई टू स्टे टिल द एंड, आखिर तक रहने की कोशिश कीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Okay, so let's begin with our English audience. This is Bitcoin. I'm looking at the chart right now. This is I don't want to do technical analysis right now on Bitcoin, but I will do TA on other AI coins that as I promised. So let's start with Injective. Injective protocol right now is very hot, and people are looking uh, at Injective protocol as one of the leading AI project right now for various reasons. But if in this video we are not looking at the fundamentals or what the projects are, but we are purely looking at the price action, the technical analysis on all these coins. So for Injective, you can see that we are in the range. We just dropped down from the red zone. This is the smart money concept in uh, uh, a smart money concept indicator that I use. It has three major ranges. One is red, right at the top, and it uses a lot of algorithms, especially Fibonacci labels and all that. So it gives you an idea where we are at right now and where we can go. The red zone is obviously the retracement zone. We always bounce back from that zone. Usually that's what these indicator shows. And this gray area, in the middle is our area where we understand that if the coin is in the bullish territory or in the bearish territory. If it's above this area, that is a bullish territory, which is right now this coin is. And if it's below this area, which is a bearish area, we can say that the coin is in the bearish move. And the green zone here is obviously the return zone, or you can say that the best zone to buy into this coin. So we have a major upside. So right now we can see that the coin is in the bullish territory, obviously, and the amazingly, although it fall back from the red zone, but if you can see, if we draw a trend line, it is clearly into a symmetrical triangle. That's what they call. And if I take a base of this symmetrical triangle where the pole I can draw for the price action, it can go up
up to $10. So that could be our target easily. Okay, so this is how I draw my targets. That if and it's getting very tight. You can see this in this range. It's getting very tight, and anytime it can blow past $10 mark. So right now is almost $8. So you can say that $2 gain you can have on this coin very quickly if markets move or this coin moves upside from this. So that's one way of looking at it. The other way of looking at the bearish scenario would be if it continue to fall, because it's right now it's in the falling pattern, and if it continue to fall and easily it can bounce back from this region. First support region is $7. So it can fall further $1 or 90 cents, I would say, and then fall and comes back and test these regions or attain these levels. But if it goes down, if it could not hold the $7 support, then it can go easily down to $5 or $6 range, which would be a better buy option, I would say, for anyone who's looking into this coin, getting into the position into this coin. Your best area would be around $5 to $6 here in this area. So that's TA for Injective. Now let's look at our ChainGPT. ChainGPT is a very new coin. As soon as it introduced, I introduce you, so you can see that there's no data available before this date, and it just introduced. We are looking at obviously 4-hour chart, which gives us quite confidence that where the price levels can go from here. 4-hour candles are very strong candles to tell you the trends. So again, we can see that similarly with Injective, just like Injective, it's in a fallen trend, but the problem here is that the very less data is available. The with the beginning of this project, there was a lot of hype created, and lot of volume was there, but now the volume died down, and we can see that with a very less volume we have a downturn. People are taking profits or whatever they're getting out from this project. They are not interested, or maybe they think that it's a rug pull or something. So it started when people started, or I started noticing it. It was around 18 cent, and now it is in 10 cent. Can it go further down just like Injective? Yes, it can go further down, and the areas I'm looking at it obviously is 9 cent. 9 cent could be a good buy for this project. The the thing I would like to mention is the hidden bullish divergence here. The prices are falling, and here you can see the RSI is it is in kind of a little bit rising on the on a trend line. So if the prices are falling and RSI is doing opposite way, going opposite way, it shows a little bit hidden bullish divergences. So again, right now if you look at RSI, it is in the area of I would say a bearish trend. The prices are bearish. The only thing is that the hidden bullish divergences can play out, and it can go back up to the next level. It is this coin is in the price discovery mode. So so really no TA can tell you right now. You can see that the smart money concept is also on, but it's not showing up here because really there is no data available to find out where where the prices can go from here. So it's in the price discovery mode. If you like the project and you are believing in AI bloom in the next
bull run, then you can scoop some of these coin uh, to have a good bag of these moon bags, I would say, of these coins. So this is uh, ChainGPT. Another coin we discovered was Allin. Again, Allin. I told you that I'm very bullish on this for the long run because of their total market supply is only 1 million coins. So this can go really high with this little and it can move very fast too. So another thing is that the price action, we can draw our smart money concept, different levels, and we can see that we are the recent candle is indecisive. The long shadow at the top and the long shadow at the bottom show that the prices are indecisive where it want to go. But we know that because of these ranges that we see that it is still in the red zone where it can easily dump back to $3 range and then bounce back from there. And why I'm saying that, because of these ranges, as I said, they have different algorithms, different Fibonacci levels built into it, and it shows me that still it is in the red zone. The prices are still in the red zone, and it can easily fall back to $3 level, support level, and if $3 support level couldn't hold on, and the markets usually the overall markets dump, Bitcoin dump, then it can fall back easily to $2 area. So if somebody wants to enter into this coin, they can wait for a while until it came back down to $3 or $2 ranges. $2 ranges, I would say, would be a better buy for this coin right now, than right now, or $3. So these ranges. It is kind of a falling wedge. It is forming and falling wedge usually. Um, you know, uh, it is not a wedge, even a falling trend. You can say um, it is in the falling trend. Um, and usually these kind of trend usually, if the markets comes back, they tend to go up from here. So uh, again, uh, very less volatility right now. The recent 4 hour candle shows that the indecisiveness, and we can see that this can play out very nicely. If it goes back to these two ranges, I would be looking into scoop up more of these coins. Um, Now, if we want to look at some other artificial intelligence coins, so if you filter out in coin market cap, if you filter out the projects based on artificial intelligence, the number one in the game is obviously the graph GRT coin, and the graph is from its all-time highest. Is sitting in a very nice place. Is recently, yes, it gone up to 20% already in last 7 days, and in last 24 hours it gone up 10-11%. But look at the bigger picture, and that's what I want to concentrate, and I want to show you guys GRT. Yeah. So so obviously, if you look at the GRT coin right now, again, as I said, it is above and all. It is sitting up. It's really overbought territory. If you FOMO into this, there's a good chance that it fell down to 15 cent, uh, or back to these levels. So I would say just wait, let it cool down a little bit. 2-3 cents, you can buy it cheaper. But would you wait for 2-3 cents to go down and then buy it, or look at this all-time high? If I show you
the data that it was like $2.2 3 cent in the previous high. Um, so so that's the question, that would you chance just hold on for 2 cents to it goes down 2 cents and then buy it, or you are still interested in buying in at these levels at 17 cent, where the upside is so high that if it goes back to this all-time high, it is it's a huge potential of 20x of getting into 20x trade. So again, not a financial advice, but that's the bigger picture. That's the whole idea that I want to show you, that although it's overbought condition, yes, 1 or 2 cent it can go back down, but you're just waiting or for 2 cents to come down and missing out all these gains that it can get in next bull run in 1 or 2 years, 20x of your money easily. So that's one way of looking at it. Let me again. So how you want to filter all the AI coins in coin market cap? You go to filters, you go to industry, go down to, did I miss it? Did I miss it? Yeah, AI and big data. Okay, so number one obviously is graph, and the one is catching up is Injective, that we just looked into it and we just talked about it. And then number three is render token. Render is a project where I said I'm not going to do the fundamentals, but just quickly touch upon render, because we never talk about render in our stream. So render is kind of a project which is really necessary in the artificial intelligence boom. When it comes, you are actually generating images and delivering images on decentralized computers, and the main thing on this project to be successful is how fast it can render those images and videos using the decentralized blockchain technology. So that will be very interesting to look into in the future. Very interesting project. Again, in last 7 days, it is up 33%. Just like Injective, for last 7 days, it is up 47%. So the huge gains on these coins right now. One of the coin we have talked a lot about it is AGIX. It is also up 12%. Recently, before these coins had a run, this coin already went up quite a bit. So it is kind of in a accumulation range, even if it's 12% up. Again, this big potential for this to for the gains. For these two, I would little bit wait till they cool off, and then I can have a better entry point. But you can definitely get into HIX. Then we have Ocean Fetch .ai, Ocean Fetch .ai, Ocean Protocol, Oasis Network, Fetch .ai. These coins are available to you. Even I think Injective is also available to you. Graph also available to you for all the big exchanges where you can buy. Um, so there are a lot of artificial intelligence coins available. You can see that even we search on it, and there are a lot of projects just coming, making their way in the list. But I would just stick with few big names here on the top if you want to invest, and some really low cap gem that we just discussed, like Allin and ChainGPT, which has a big, huge, like 100x, 1000x potential in next bull run. So do not over leverage yourself of going into all of these or many of these, but I would say
some of the top 10 20 coins from here you can pick. They are good projects, they are making their way up in a big way, and definitely a lot of big upside for the future. That's it for my English viewers. I will conclude my stream with my Urdu language listeners, going over the same thing that we have gone with you guys. So thank you very much for watching. So my उर्दू लिसनर्स, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन्स की, तो डेफिनेटली जैसे मैंने अपने इंग्लिश लिसनर्स को बताया, उनके बारे में डिस्कस किया कि नेक्स्ट जो बुल रन आना है अब नेक्स्ट ईयर अराउंड द सेम टाइम, इसी टाइम तकरीबन मार्च अप्रैल में के बाद, तो उसके लिए जो लोगों की बिग प्रेडिक्शन है वो यही है कि अब नेक्स्ट जो बुल रन होगा वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स का होगा। और जो इन कॉइन्स में इन्वेस्ट अभी कर लेगा उसको ज़्यादा चांसेस हैं आगे बिग गेम्स के, और मिलियनर्स बनेंगे इसमें, और अच्छे चांस हैं इसमें पैसे अपने जो 10x 100x और इवन इन सम केसेस 1000x करने के, क्योंकि बहुत ही लो कैप जैम्स हैं जो हमने डिस्कस किया रिसेंटली। अगर हम बड़े कॉइन्स की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उसमें ग्राफ है नंबर 1 पे और सारे एक्सचेंजेस में अवेलेबल है। अभी 17 सेंट पे बैठा हुआ है, जबकि पिछले बुल रन में $2-3 तक जा चुका है। और तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए सीधा कि अभी भी यहाँ से भी इस प्राइस एक्शन से भी जो है वो हम इजीली 20-30x अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट बुल रन में, अगर ये प्रोजेक्ट जैसे कि हमने देखा कि सरवाइव किया है इसने थ्रू आउट बेयर मार्केट, तो एक अच्छा चांस है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के हवाले से नेक्स्ट बुल रन के लिए। इसके अलावा इंजेक्टिव जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी हॉट कॉइन हुआ है, और अगर आप उसमें एंट्री करना चाहते हैं तो मैं तो ऑब्वियसली मैंने मिस कर दी बोट, तो मैं तो नहीं अभी एंट्री कर रहा, मैं वेट करूँगा इसका कि थोड़ा सा रिट्रेस करे $5 और $4 की रेंज में वापस आए, जो कि हमने अपनी टेक्निकल एनालिसिस में देखा कि इसकी जो रेंज बनती है। जो मैं वापस इसमें आना चाहूँगा, ये देखिए $5 या $6 की जो ग्रीन जोन है, इसमें जब वापस आएगा अगर, तो मैं उसमें फिर एंट्री मार सकता हूँ इसमें। लेकिन यहाँ से भी मैंने ये अपने टीए में बताया आपको कि यहाँ से भी ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हम जब कर रहे थे टीए इसके अंदर था, इसके प्राइसेस थे वो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर थे, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका है इसको, और यहाँ से ब्रेक करके जो नेक्स्ट इसका टारगेट जो है मैंने बताया था इंग्लिश व्यूअर्स को कि इसका $10 हो सकता है, जो कि हमने इसका पोल की लेंथ ली थी, और हमने इसको एक अप्रॉक्सीमेट रेंज में इसकी $10 बनती है कि यहाँ से जो है वो $8 का हो गया ऑलरेडी है। हम $7 पे इसको चेक कर रहे थे यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी इस रेंज को ऊपर इसकी तरफ प्राइस डिस्कवरी में अपने जा रहा है, और हो सकता है $10 तक चला भी जाए। तो एक तो ये इसमें क्विक गेन हो सकता है आपको $2 का, अगर आप एक स्कैल्प ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं अगर वो करना चाहें तो इसके चांसेस ज़्यादा हाई लग रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से क्योंकि ओवरबॉट कंडीशन में है और काफ़ी इसकी RSI वगैरह को रीसेट करने के लिए अगर ये वापस नीचे आता है, तो इसकी एक रेंज, सबसे पहली रेंज $7 की हो सकती है, फिर उसके बाद जो है ये $5 $6 की रेंज में भी आ सकता है। तो आई वुड मैं इसका वेट करूँगा कि मोस्ट लाइकली दिस इज जो रेंज होगी $6 के अराउंड की रेंज, $5-6 के अराउंड की रेंज इसकी बेस्ट रेंज होगी वापस इसमें एंट्री लेने की। इसके अलावा हमने बात की चेन जीपीटी की, कि उसका अंदर जो है कुछ प्राइसेस जो हैं वो इतने अच्छे अभी नहीं नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर सी है हमने इसको देखना शुरू किया था 18 सेंट पे था ये, और इस वक्त जो है वो 10 सेंट के अराउंड चल रहा है। इसमें अगर किसी को एंट्री लेनी है तो 9 सेंट के अराउंड में ले सकता है। 8 या 9 सेंट का जब हो ये अपनी रेंज में नीचे की तरफ आए, और उसके बाद इसके अलावा जो इसमें एक वाहिद अच्छी बात नज़र आ रही है वो कि फॉलिंग प्राइसेस के साथ RSI रीसेट हो गई हैं, और वो जो है अपवर्ड ट्रेंड कर रही हैं। तो बहुत मामूली सा बुलिश हिडन डाइवर्जेंस नज़र आ रही है यहाँ पर, जो कि इसको वापस ऊपर की तरफ लेके जा सकती है 12-14 सेंट की रेंज में अगेन। लेकिन ये बहुत न्यू कॉइन है, अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो इंडिकेटर है वो भी इसकी रेंजेस को तयन नहीं कर पा रहा अभी, और ये प्राइस डिस्कवरी में है। बहुत ही इनिशियल लेवल पे इनिशियल एंट्री आप इसमें ले सकते हैं, बहुत ही वेट भी कर सकते हैं, और मज़ीद अगर नीचे आता है तो और अच्छी एंट्री इसमें मिल जाए अगर आपको प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो।
इसके अलावा हमने ऑल इन के बारे में बात की कि फॉलिंग रेंज के अंदर है इसके प्राइसेस, और जो जो रीसेंट 4 आवर की जो कैंडल है इसकी बहुत ही पतला सा ऊपर एक शेडो, बहुत पतला नीचे एक लंबा शेडो और बहुत ही छोटी सी इसकी बॉडी है। तो ये इनडिसाइसिव कैंडल के अंदर है, और यहाँ से कहाँ प्राइस जाएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन कंटिन्यू कर सकते हैं इसी रेंज में और मज़ीद नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये अभी अगेन प्राइस डिस्कवरी में, लेकिन अगर कंटिन्यू करता है नीचे तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो रेंजेस हैं वो नेक्स्ट जो $3 और फिर सपोर्ट है, और फिर उसके बाद $2 की सपोर्ट है। तो वो रेंजेस होंगी, $2 की रेंजेस होंगी, इसमें दोबारा एंट्री लेने की मैं समझता हूँ बहुत अच्छी। और इस कॉइन के बारे में मैंने आपको बताया भी कि इसकी जो अपसाइड है वो बहुत बड़ा है। ये ऊपर की तरफ जो है मतलब ये सिर्फ 100 मिलियन कॉइन है इसके, और ये अगर ये ऊपर बहुत तेज़ी के साथ इसके प्राइसेस हैं इवन थाउजेंड्स में जा सकते हैं अगले बुल रन में, तो बहुत ही ज़्यादा अपसाइड हो सकता है, 1000x का अपसाइड हो सकता है इस कॉइन में ईजीली। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा अफोर्ड कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करना, तो मैं अगेन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या कंडीशन है आपकी फाइनेंस की, लेकिन वेरी बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है ये ऑल इन। पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कहाँ लेना है कैसे लेना है, तो मैं और क्या है इनके बारे में, तो मैं इसलिए डेप्थ में गया रहा है कॉइन करते क्या हैं और बेसिकली क्या है, लेकिन मोस्टली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। और आखिर में बिटकॉइन को एक नज़र देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। बिटकॉइन जो है वो एक तरह के फॉलिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हिस्सा है, जो इसके प्राइसेस 4 आवर ट्रेंड पे हैं हम ये देखिए। और अगर इसकी हम यानी कि आज के हम बोलें कि कहाँ जा सकता है प्राइस एक्शन, अगर इसका ये बहुत टाइट रेंज में आ गया जहाँ से डेफिनेटली इसको जल्दी ब्लो अप करना है, और अगर ये ब्लो अप करता है तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 31,200 के अराउंड है। 31,200 के अराउंड में इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है। कल या परसों के अंदर ये जो है आप डेट्स देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आज 15 तारीख है ये। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं जो कि बन रहा है इसका, तो ये कल जो है 16 तारीख को या 17 तारीख को 16 तारीख को बेसिकली कल जो है ये कल रात तक किसी को भी है 31,000 से ऊपर टच करेगा। तो ये बिटकॉइन का भी टीए कर लिया हमने क्विकली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन में कुछ को देखा हमने। आज की स्ट्रीम जो थी वो बेसिकली मेरे प्राइस एक्शन के टारगेट्स के हवाले से थी जो कि हमने की मुख्तलिफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉइन की, और आखिर में हम चल रहे थे बिटकॉइन को भी देख लिया कि वो कहाँ जा सकता है। और बिटकॉइन ही डिटरमाइन करता है बेसिकली, अगर ये फॉलो करता है इस पैटर्न को ऊपर आता है 31,000 की रेंज से ऊपर, तो डेफिनेटली दूसरे कॉइन भी इसको फॉलो करेंगे और तेज़ी से ऊपर आएंगे। तो आई थिंक कि सैटरडे मॉर्निंग के लिए वीकेंड का पूरा हमें एक जिस्ट मिल गई क्या हो सकता है। कल अगर हो सकता है कल सुबह में डेफिनेटली दोबारा फिर आपके में हाजिर होंगे कुछ इनका फॉलोअप्स, लेकिन इन प्राइस एक्शंस का, प्राइस टारगेट्स का, जब तक इजाज़त। अगर आपको इससे कुछ मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। पिछली वीडियोस भी जो है मेरी जो मैंने की, आप देखिए 133 व्यूज़ हुए हैं इस पर पिछली वीडियो पे जो मैंने ऑल इन और चेन जीपीटी पे की। लेकिन जब इतने ज़्यादा व्यूज़ हो रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को और लाइक भी करें मेरी वीडियोज़ को, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूँ अपना वर्क। तो प्लीज़ आई नीड योर हेल्प ऑन दैट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है फिर। खुदा हाफ़िज़।